Good evening, everyone. Welcome back to this Creative Warrior online program powered by Vidyadaan. Here, we are back with another very interesting topic today. This workshop is on 3D architectural modeling and graphic designing with Mr. Anubhav Dev. Hi, Anubhav ji, how are you? Can you hear me? You're on mute. You're on mute. All right. Okay. How are you, ma'am? I'm doing good, sir. So let me quickly introduce Mr. Dev. He is a graphic designer, come video editor, and 3D architectural modeler. He started his career as a graphic designer, and his work he's been working for past 3 years as a full-time graphic designer in the field of social media, advertisement, and print media. He has also worked for many companies and several clients like he's based in Guwahati and a graduate in animation and VFX. His keen interest in 3D architectural modeling, texturing, lighting, rendering, and visualizations is really interesting to know about. So we all are going to learn from Anubhav ji today. And how come animation and 3D this architecture they go along? Actually, there are many aspects. Can you hear me now? Sorry? Yes. Am I audible? Yeah. Okay. Yes. Okay. So actually, there are many aspects of 3D modeling. And out of those 3D aspects, I think 3D architectural designing is one part of it. And apart from 3D modeling, like हमने जब फिल्मों में या फिर कहीं भी जितनी भी 3D मॉडलिंग यूज हुए हैं, चाहे वो बाहुबली हो या फिर कोई भी एनिमेशन कार्टून एनिमेशन का फिल्म हो, हमने सब जगह 3D एनिमेशन का यूज देखा है, साथ में VFX भी होता है। पर आज हम 3D आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग घर या फिर फ्लैट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, उनकी इंटीरियर्स कैसे डिजाइन होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। Sure, I'm sure this is going to be very exciting and very different than what basic character design is. So over to you. I'm giving you the rights to share your screen and the session is over to you. All right. Okay. Okay. Is the screen visible? Yes. All right. Okay. So I've made a small presentation. So I'll just get into the small presentation, then we'll hop into the software itself. All right. So sure. As a graphic design, as a medium of communication, it's a craft where professionals create visual content to communicate messages. Over the past decade or so, past 20 years, past decade, we have seen a lot of changes in the media, the print media, the visual medium as well. So apart from the print media, we have a lot of creations like in the social media post or other stuff where we can use like from logo making to pamphlet designing to brochure designings and all of those. Now, apart from that, we have also seen a great increase in the designings of UI and UX, like the mobile applications here we can see here. Let me just, yeah. Okay, so like you can see on this screen, the phone, the UI that we design, on the phone. Let's say, for example, we have an Instagram UI or a Facebook UI. So like here, this is an example of, say, an app that is cash pay. So it has a UI which has to be designed. So that is the job of a graphic designer. So like, also apart from that, we design game backgrounds, and people who are interested in paintings and drawings, they can use Photoshop as a digital painting medium.
and photo editing is, of course, just a part of Photoshop, as we know. So all of these stuff are included in graphic designing. Um, Now, in graphic designing, we have two very important things. One is the vector graphics, and the other one is raster graphics. Now, as we can see here, whenever we design something based on raster graphics, that is pixel-based design, you can see this is raster graphics. So here the pixelation occurs. If we can zoom into this, you can see that this is raster graphics, which is pixelated. These are pixels, like हमारे जो images होते हैं, कोई picture जब होता है, तो हर एक picture में इस तरीके के pixels होते हैं. ये जो pixels है, हम लोगों के design में भी होते हैं. अब depend ये करता है कि how we put this into our creation. Like मैं यहाँ पे एक छोटा सा example आपको दिखाता हूँ. Like this is a banner, web banner of Patanjali. Okay. So इसमें ये जो स्वामी रामदेव जी का जो पोस्टर है, इसमें अगर आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे काफी सारे पिक्सेल्स हैं, और ये पिक्सल जो होते हैं वो कलर वेरिएंट के हिसाब से होता है. जैसे ब्लैक से हम लोग व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज ब्लैक पिक्सल, एंड एज वी ग्रो टुवर्ड्स द व्हाइट बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सिंग होता है ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. तो ये होते हैं पिक्सल्स जो हम यूज करते हैं. लाइकवाइज हम लोगों का एक और होता है कि वेक्टर इमेज होता है. जैसे मैंने एक लोगो बनाया था एक क्लाइंट के लिए, तो उनका ये लोगो था फार्मर्स कनेक्ट, सप्लाई चेन सिंप्लीफाइड. नाउ ये जो लोगो है, ये आप देख सकते हैं ये वेक्टर बेस्ड है. चाहे मैं इसको कितना भी जूम कर लूं, यहाँ पे आपको कोई भी पिक्सेलेशन नहीं दिखेंगी. ऑलराइट, सो वहीं पे अगर मैं इसको पिक्सल कर दूं, यानी मैं अगर इसको फोटोशॉप में बनाता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड ग्राफिक्स है, तो वहाँ पे हम लोगों को ये पिक्सल दिखाई देंगी, जो कि एक बैनर में जब हम लोग बहुत बड़ी बैनर्स बनाते हैं, यू नो, बिग बैनर्स, इट्स बेटर टू डिजाइन ऑन अ वेक्टर प्लेटफॉर्म लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, जिसमें कि मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ. तब क्या होता है कि जब बहुत बड़ी बहुत सारी बड़ी बैनर्स बनती हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू क्रिएट समथिंग ऑन वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म लाइक इलस्ट्रेटर. अब एक और चीज है, वेक्टर जो ग्राफिक्स होता है वो एक मोड होता है CMYK, जो कि प्रिंट मोड होता है. यानी ये जो मोड होता है, जब हम प्रिंट में जाते हैं तो कोई भी कलर जब हम डालते हैं, तो वो प्रिंट जो मशीन होता है उसमें ये 4 कलर्स होते हैं. तो इन 4 कलर्स के इंक मिक्स करके हम लोग एक एक डिजाइन को वो लोग प्रिंट करते हैं. उसी तरीके से जब आप कोई वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स बनाते हैं, ज़्यादातर जब हम वेब बैनर्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, तो उसमें CMYK की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें we can just put RGB and just आप उसको directly post कर सकते हैं. उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि CMYK में ही करना होगा. Okay, after this we come to the next one. This one is graphic design, color theory and font. Now graphic design, there are a lot of stuff in graphic design, but the most important aspect is this one, where कोई भी कलर जब हम देते हैं, इट हैज टू बी वेरी सूदिंग टू द आई, प्लेजेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को जब ये दिखे तो वो अट्रैक्ट करे. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसी प्रेजेंटेशन में ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको अगर चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बहुत ही डार्क बना दिया, ये मैंने ब्राउन कर दिया, और इसको मैंने कर दिया कोई और दूसरा कलर, मान लीजिए मैंने ब्लैक कर दिया. नाउ दिस doesn't seem to be great, और पूरी तरीके से जो इसमें इंफॉर्मेशन वो दिखाई भी नहीं दे रही है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू लाइक ऑन ए डार्क बैकग्राउंड अगर हम इसको व्हाइट कर दें तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, या फिर इससे भी ज़्यादा सूदिंग करने के लिए हमने ये कलर डाला है, या फिर आप इसको ले सकते हैं जी. ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि अगर आप टाइपोग्राफी में ध्यान दें, तो वहाँ पे एक तो है कि आप टाइपोग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं. जैसे
स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर्स, उसके साथ आप जब कोई स्मॉल केस लेटर्स यूज करते हैं तो उस चीज का जो इम्पैक्ट है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो भी आप चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन, इफ यू लुक एट दोज पोस्ट, you will find that they use different kind of fonts. They use fonts on, based on capital characters, and then they also mix it up with small case letters likewise, and that makes the design very attractive thing. So um, we come to the next one. Now, one more important thing is that पहले जब हम लोग print media में होते थे, small छोटी सी जगह पे भी, there was a lot of information. Now the things have changed over time. Now what happens is that people do not have time. So jitni jaldi, you can create something that appeals to the eye, because people जो है अब Instagram या फिर Facebook के दिन में बहुत ही जल्दी कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन अगर उनको दे पाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लाइक रेलिवेंट इमेजेस आपको डालनी होती है जो कि आपको को बहुत ही सूट करते हैं. तो there's a survey according to which it says that 94% व्यूज ज्यादा मिलते हैं जब रेलिवेंट इमेजेस यूज की जाती हैं. तो अगर यहाँ पे ये पतंजलि का एग्जांपल अगर हम देखें तो this banner is very simple, but we get this idea कि यहाँ पे the product that has been shown, this is basically Ayurvedic. As soon as you see this banner, the first thing that goes, our eyes go into is this jari booty. So after this, the only thing, because of this color combination, this is light yellow, and then there is orange, Ramdev ji. So what they have done is they have put this thing on the front and made this the highlight of the whole story. And then they have put Swami Ramdev ji, and then the eyes go to Patanjali. So this is one very good example of how you can use the spaces between, the pictures, the images, and then you can use some text as well. Now, यहाँ पे एक और चीज बहुत important है. The less of the text and the more of the images, like I said before, the better it is. यहाँ पे जड़ी बूटी पहले है, उसके बाद रामदेव जी का फोटो जो कि ज्यादा यहाँ पे फुटेज ले रही है, उसके बाद फाइनली पतंजलि. Okay. So this is graphic design. We shouldn't be discussing theory part too much because the practical नहीं हो पाएगा. So I'll go straight into 3D. Now, आज जो हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करने वाले हैं, that is basically 3D Max, that is from the same company that makes Maya. This is the interface. This is Autodesk 3ds Max 2019. और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो 3D जो डिजाइनिंग होता है उसमें हम लोगों ने पहले भी काफी सारे कैरेक्टर्स या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर्स हो जाए या फिर कोई भी फिल्म सीन हो जाए जहाँ पे there is inclusion of both real human being, and then there is also stuff like bull, or there's stuff like cats and dogs that are being made on a 3D platform, and then they are being used on those scenes. Now, when you look at those scenes, you can't even make out of which one is what, whether it is created or is it the real one. So in 3D architectural modeling, this is the same application that we use to create 3D modeling for residential buildings या फिर कोई भी किसी तरीके का डिजाइन जो कि आपको इंजीनियर देता है. उसके बाद we build the same model on a 3D software like 3ds Max. There are other softwares as well like Blender. So in those softwares, we can design this kind of design. Like you can see this interior, there is light and there are tables, there are showcases. This is the window, this is the floor. I'll be explaining them in a minute. Now, before that, just discuss a little bit about this. Now, this is basically polygon modeling. अगर the basics अगर हम इसमें देखें तो this is polygon modeling. I'll be showing how it is made
on the software itself. Now, when we'll be opening this, software, 3ds Max 2019 or कोई भी version you can use, that is okay. You'll get this this interface. This is the normal one. This is the default interface. There are a lot of interface options under this. Now, when you open this up, these are the 4 views that you get. This is the top view, this is the front, this is the left view, and this is the perspective view. I'm coming to the presentation in a minute again. So likewise, this is Polygon Modeling. If I hold my, we are here on the standard primitives. Okay, so this is the standard primitive. This is the create panel. Here we create. Let's say this is a box that we take, and then we can hold this, the left mouse click, we can hold this and we can drag this down. Jitna bhi aapko bada isme shape chahiye, you can drag this down, then leave the left mouse button and then just up, down maybe kar sakte hain, up bhi kar sakte hain. You can leave it and then hold it there and then just leave it. Now when we create this, just a second. This is a very CPU based software. It also takes a lot of RAM. So sometimes you might see this not responding option because it takes a lot of hardware power. So sometimes the software may glitch a little bit. That's okay. Now you can see these are the perspectives. Okay, this is a perspective view. Now when you look at from the top view, we see the same thing here from the top view. This is the front view, yani ye wala side, and this is the left view. Okay, if we see this, I'll be going back to the presentation just a second. Okay, so this is 3D Studio Max that I have been showing you. Now, the same thing goes for 3D Maya and Blender. You can also make architectural designs over there as well. But for the simplicity of making architectural designs, we always use 3ds Max. This is this industry standard for making architectural designs. Now, what's the use of 3D design? Apart from architectural designs, we also see them in films and TVs, as I've said before. They are also being used in CGI, computer generated graphics, and then you can see these environments, animations that you see in the films. Video game development, this is another aspect where we see the development of the environments that are being shown in the game. Then there is architecture, there is engineering aspects, because आजकल के क्या होता है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो लोग AutoCAD डिजाइन्स यूज करते हैं, जहाँ पे वो लोग जो फ्लोर प्लान्स हैं वो वहाँ पे डिजाइन होता है, एंड देन दे कम टू 3ds Max और ब्लेंडर या फिर माया, जहाँ पे कि उसका डिजाइन वहाँ पे किया जाता है. So a lot of studios have also made big films based on 3D based softwares like Maya. Basically जो industry standard होता है films के लिए वो Maya होता है ज़्यादातर. Now straightway the development of architectural 3D visualization allows you to clearly demonstrate what the building would be like, the construction of which is planned in the near future. Now, 3-dimensional visualization allows you to consider in detail all the parts of interest even before the start of construction work. जैसे कि कोई material वहाँ पे use होना है, कोई tiles वहाँ पे use होना है, जैसे कि इस image में हम लोग देख सकते हैं. उस building के आसपास की environments कैसी होंगी, कहाँ पे कौन सा plant होगा, कहाँ पे कौन सा tiles use होगा, कहाँ पे कैसी lighting होगी, कहाँ glass use हो सकता है. तो इस तरीके का जो एक विजुअलाइजेशन होता है वो हम लोग 3D Studio Max में बना सकते हैं. And I'll be making one. I'll be showing you here. So the materials, the environments, everything you can create in 3D Studio Max.
Now, there are certain processes that we have to go through when making architectural design. Now, this processes that included are, first one is the modeling part. Now, this is a polygonal modeling as I've shown you here. This is a polygonal modeling. I'll show you the shortcuts as well. So if this is the box that we created, I'll show you in a minute how I did it. I make it an editable polygon. Okay. So like polygon modeling क्या होता है? Let's see this. Now, if we extrude this, we can see that we can या तो हम लोग बाहर जा सकते हैं या फिर अंदर भी आ सकते हैं. Okay, this is the way that polygon modeling is done. Now let's undo this. We'll see one more bevel. So ये जो होता है, ये जो surfaces हम लोग create कर रहे हैं, जैसे ये polygon हो गया, ऊपर से हम लोगों का ये वाला एक polygon हो गया. These are the polygons that are being used while designing. ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग कैरेक्टर्स भी डिजाइन करते हैं. So यहाँ पे जो see this. The first thing that is required is polygon modeling. The second thing that you will require कि जैसे हम लोगों का body है, the first thing is the modeling. After that we have to put the texture, the body texture कैसा होता है, कहाँ पे wood का texture होगा, कहाँ पे सीमेंट का टेक्सचर होगा, कहाँ पे किस तरीके का पेंट होगा, कलर होगा. After that we go into the lighting. यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना lighting के you will never see the design, so that's very common thing. And after that we set up the camera, and the last part is render setup and rendering. I'll show you all of these inside the software. And also one more important thing, the thing that I'm going to show today, I'll be including render setup with the example of V-Ray. Now, V-Ray is a render machine which is used while rendering. Now, you can use the normal scanline render. I'll be showing you here. So this is the render setup. Okay, here you will find assign render. Here you can see that I've made this video update too, but you can also use this one. Now this is the default one. This is the default scanline renderer. But इसमें जो है आपका इफेक्ट ठीक से नहीं आता है, जिसकी वजह से हम लोग V-Ray इस्तेमाल करते हैं. So two options जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है V-Ray और Corona. These are the renderers that are being used. Okay. So हम लोग सीधा सॉफ्टवेयर में चलते हैं. Go back and just delete this guy. Okay. Now when you open this software, this is the interface. This is like a top, front, and this is left, and this is perspective. Now there are certain shortcuts that you need to know. Before that, this is the menu bar. Okay, this is menu bar. This is the toolbar. This portion. Here we will use all the tools to manipulate our designs. So उसके बाद यहाँ पे एक पैनल है. This panel is not required at all. जैसे कि इसको actually में ribbon बोलते हैं. So we don't need the ribbon, so we can hide that. Okay. ये V-Ray toolbar है. ये आपके normal जो Max की जो interface है, you can't see this panel over there. When you install V-Ray in the software, you will see this panel there. Okay. Now on the right side, you'll see this create panel. Inside this create panel, we have different options from standard to extended, compound, particle systems, and etc. All of these we can use while making the designs. I'll not cover all of these, but few of them. Now, under standard primitives, as I have shown you before, with the help of box, spheres, cylinders, and all of these, we create polygon modeling. So now let me select a box, click on it, drag over here, then leave the left click and just hold it up or down, whichever way you want. Just take it here
click it. When you click it again, you leave it. Now, in order to move this, how would you see this कि ये कैसे move होगा इसका view? What you do is hold the middle mouse button. When you hold the middle mouse button, you can pan in the viewport. Okay, this is the viewport. This is the perspective viewport. You can pan over here. Okay, just a second. Okay, so this is the pan option. You just hold the Alt button and then you can pan it like this. Okay, once you leave it, you can't select it anymore. You can't pan it anymore. So if you are inside the box option again, यहाँ पे तो again एक दूसरा create हो जाएगा. So you have to go out of this by going to the modified panel. Now this is the create panel. Okay, this is the plus symbol means यहाँ पे create होता है. ये जो boxes होते हैं या फिर यहाँ पे shapes देखेंगे, lines, rectangles, you know, these ellipses and different shapes over here. All right. उसके बाद हम लोगों का, क्योंकि ये मैंने दिखा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यहाँ पे जो क्रिएट होते हैं, उसके बाद है शेप्स, उसके बाद है लाइट्स. ये लाइट हम तब क्रिएट करते हैं जब एक बार हम लोगों का सीन प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद लाइटिंग का काम होता है. उसके बाद आता है कैमरा सेटअप और दूसरे ऑप्शंस जो कि ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, तो हम लोग ज्योमेट्री में ही रहते हैं. अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू यू नो पैन इन दिस व्यूपोर्ट, लाइक हम लोग कैसे इसको मूव करेंगे, कैसे हम लोग इसको एडिट करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड. द मोर you know the most used options are these. This is the select and move button. नॉर्मली जो होता है हम लोगों का, जब भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये वाला आप लोगों का एक्टिवेट हो जाता है. दिस इज the select and move button. The shortcut is W. Hold on a second. This is again updating itself. Okay. So this is the W. We can move this. This is the Z-axis. This is the X-axis, and this is the Y-axis. Okay, so now you can see when I move this over here like this, you will be seeing here a lot of these are the changes. You know, you can also do it from here like this. This is the y-axis क्योंकि हमने y-axis पे move किया है. Likewise अगर हम लोग x-axis पे move करते हैं, then you will see there's a change of number over here on the bottom panel. So this is the x-axis and this is the z-axis, top and bottom. Okay, there you'll see the change in numbers over here. Okay, so now we have this is the, we have covered this select and move button. The next is rotate button. Shortcut is E. Whenever you select this, say you are on the select and move button, just press E and you will be here. This is the select and rotate button. You can rotate it. You can rotate it here. जैसे भी आप rotate करना चाहते हैं. Okay. You can see all the viewports over here. And there is one more thing. अगर आप लोग किसी भी viewport के ऊपर अगर आप लोग अपना mouse रखते हैं and then press G, then you will hide the grid line. Because while working, these grid lines sometimes, you know, disturb you. So just hide these grid lines by pressing G. Okay. Now this is the rotate tool. Shortcut is E. Next is the scale tool. This is the scale tool, and the shortcut for it is R. Whenever you press, suppose I'm here, select and move tool W, we go to the scale tool by pressing R. Right? So we can scale this uniformly, or we can also scale it based on the y-axis, based on the z-axis, and the x-axis. Okay.
Control Z is the same thing. It's in the same way it works in Photoshop and Illustrator. Control Z makes this undo, undo the scene, or it changes in the scene that we have edited. Okay. After this, one more thing that I would like to clear here is that this is the perspective panel, and most of the work that we do is covered here. So how do you maximize this viewport? Now a lot of people do this, इसको select करके बड़ा करते हैं, but we don't need to do this. Okay, you don't need to drag this button, just place it here. Okay, when you hold, when your mouse click the left one is in this panel, in this viewport, just press Alt plus W, and you will be going into the full viewport. Okay, जो पूरा दिखे, क्योंकि मॉडलिंग के टाइम पे हम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, so we'll just work with the perspective view. Okay, so I've shown you this. W is the move and select and move button, like this. This is the E button that will rotate. Okay. And then we have R, that is scaling, uniform scale. Okay. After that, we have some tools over here. The most important are, this is the snap tool. Okay. If you press, now this is on a scale tool, like here it is selected, select an uniform scale. Now we press the W key, and again it selects the select and move tool. Now this is the snap tool. Now snap tool का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं पे कुछ चीजें जब सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हैं, आप देखेंगे इस पे अगर हम लोग सिलेक्ट एंड मूव करते हैं तो एक स्नैपिंग का ऑप्शन आपको मिलता है. मतलब जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्नैप करेंगे, आपको फील होगा जैसे कि ग्रिड में कहीं पे स्नैपिंग जैसे चिपक रहा है. ओके, इसका काम यूज हम लोग बाद में देखते हैं. एंड देन वी हैव दिस एंगल स्नैप टूल. नाउ एंगल स्नैप टूल क्या करता है कि आप ये पहले वी प्रेस ई. नाउ विदाउट द एंगल स्नैप टूल वी कैन रोटेट इट दिस वे, राइट? इफ वी प्रेस द एंगल स्नैप टूल, we can rotate this on a certain angle. Now, how do we define at what angle this will rotate? If you right click in the angle snap button, the shortcut of this is A. We right click at it, you will see this dialog box open up. So just a second. Okay, so this dialog box open up, and here you will see this option called angle. Now in this option, hold on a second, it's updating. Okay. So this is the option that we see when we right click over here on the angle snap button. So here we can change the angle. Now this is the default one is 5 degree. But we don't want it. Normally most of the time हम लोग 90 degree पे use करते हैं. So just click at this 90 degree and cancel this. Okay. So this will rotate at 90 degree. All right. This is the workspace module. You can select different modules for the workspace. The best one is default. Again, the shortcut to come out of the full screen is Alt W. Okay. When you press G by keeping the mouse button over here, we press G, G, and G, and here as well. Okay. Now this is the viewport. You can select the viewports from here as well. On the left, you can see on the left top button, you will see this different options, and top, orthographic, bottom, front, back, the same options you are getting over here. This is the front one, this is the top one. The same thing you can explore from here as well. If we select top, you'll be looking at this from the top viewport. Okay. Same thing. So again, one thing, if you are in any of these views, like we say this is the top view, and we just press by
mistake if you just press alt button and likewise you rotate this. गलती से ऐसा हो जाता है. So what we do then is that just press the P button and you will be getting back to your normal perspective view. Okay. Alt W, go to the full screen. We can select the top from here as well. And we can go from here. This is again something that you can select it. Please don't press this guy because that will rotate the whole thing. You don't want that, right? Just hold on a second. Okay. Sometimes the grid line disappears. This may happen if the software is not updated, because sometimes what happens is that there are glitches that occur. So anyway, that is all right. It's not a problem. Now I'll be hopping into modeling something straight away. Just delete this guy. And we will reset this. Okay. Don't save. Yes. So this is the reset button. Sometimes क्या होता है कि problem हो जाता है and the viewports they behave very differently or difficult होता है चीजों को मिलना. So we'll press Alt and W here in the perspective viewport. Just hold your left mouse, click नहीं करना यहाँ पे, just hold it and press Alt W to go to the full screen mode. Now I have kept one CAD file over here. CAD file वो फाइल होता है जो कि इंजीनियर्स आपको देंगे जब आप डिजाइन करने के लिए बैठेंगे. All right, just a second. Okay. So the first thing that you need to do is go to files, go to import, and just go to the file that you have saved some. And I have saved it here in this folder. Select the file and open it up. Now this option will come up that will ask you which is the file that you would like to get into, because जब engineers इसको use करके देते हैं, जब वो लोग बना के देते हैं, तो they use different default measurements. Like engineers के behalf पे अगर मैं बोलूँ तो वो लोग ज़्यादातर काम millimeters and centimeters में करते हैं, इसीलिए that is by default centimeters होता है. आप इसको rescale भी कर सकते हैं, but I would suggest not to do that. Just keep it as it is and okay. So आपको एक AutoCAD का फाइल मिल जाएगा इस तरीके का. आप जब भी इसको क्लिक करेंगे, you won't see these axes. You can see these axes on grayscale mode. Now how do you select it? Press W. Okay, just take it to the middle. अब एक और चीज मैंने जो बोला था कि स्नैप टूल ऑन है, आप जब भी इसको ऐसे लेके जाएंगे तो आपको फील होगा जैसे स्नैप हो रहा है, but you don't want it, so just disable it. Shortcut to this is S. Okay, disable it. Now straight away let's select this guy. यहाँ पे standard primitives में box या फिर ये जो है ये polygons होते हैं, will not go into that. I'll just make it with AC extended करके एक ऑप्शन था. जब आप create panel में ये प्लस सिंबल क्लिक करके यहाँ पे आप ज्योमेट्री के अंदर standard primitives नहीं सिलेक्ट करके आप AC extended जाएंगे. And now you can select this angle, the snap tool, the snap tool, pressing S. Okay, go to the top viewport, like press T. Okay, when you press T, you will get this top viewport. तो हमें यहाँ से इस viewport में जाने के लिए अलग से press नहीं करना, हमें perspective में ही रह के हम लोग top viewport select कर सकते हैं. Now ये grid line जो है disturb करती है, तो we'll switch this off by pressing G. Okay, now we have this snap tool on. We need to create a wall. Okay, this is wall.
हम लोग का जो नॉर्मल हाइट होता है वॉल का वो 10 फीट होता है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज यहाँ पे जो कस्टमाइज में है, एक ऑप्शन है यूनिट सेटअप। सो ऑलवेज आप लोग इस चीज को यूएस स्टैंडर्ड, कभी कभी मेट्रिक में होता है, तो जस्ट गो इनटू यूएस स्टैंडर्ड एंड सिलेक्ट इस फिट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। हम लोग के इंडिया में यहाँ पे यही फीट यूज होता है। सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस फीट, नॉट इंचेस, ओके, फीट, एंड देन प्रेस ओके। सो नाउ विल बी मेकिंग दिस वॉल। किस हाइट में हम लोग को चाहिए, वी नीड 10 फीट। एंड देन द विथ, नॉर्मल जो विथ होता है बाहर के वॉल का वो एक्चुअली में 10 इंचेस होता है, बट फॉर दिस design I'll be choosing 0.5 inches. We have this snap tool on. I'll just select here. Whenever you will see this yellow symbol, that means the cursor, the wall that will be created will be subjected here, that will be snapped to this point. So just hold it, and then just whenever you see this yellow point, just click it there. बार बार हम लोग क्लिक करेंगे। And then finally यहाँ पे whenever you close it, there will be a dialog box saying weld point. You say yes, and then this will continue. You don't need this, so right click it and let it go. Now we have created the wall, but हमें इसको देखना है, तो we press P. So we come into the perspective viewport. Okay. Now from here we have created the basic structure, the wall structure of the living room. In this room, we can see there's a dining set. This is the place for dining set. This is the kitchen. This is the sofa set. These are the doors. Okay, and sorry, this is the TV panel. Okay. Now this is the wall that we have created. After this, we need doors and windows. So to create them, now आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे walls है, या फिर कहाँ पे आपके doors हैं, या फिर कहाँ पे आपकी windows है। तो to see that, we need to see the wireframe option. Now you can go into this default shading mode and you can select wireframe override. So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे दरवाजे कहाँ पे हैं या फिर खिड़कियाँ कहाँ पे हैं। इसका शॉर्टकट जो है ये F3 होता है। आप F3 दबाएंगे तो you can go into wireframe mode. Okay, so we press F3 and we go to AC extended में अब हम हैं, so we go to doors, select this option and we go to pivot doors. हम लोगों के doors काफी तरह के होते हैं, pivot doors होते हैं, या फिर जहाँ ये जो normal होता है ये pivot doors होते हैं। उसके बाद sliding होता है, जो कि sliding doors आजकल बहुत यूज में है, लेकिन आज हम pivot doors ही यूज करते हैं। Now, इसके लिए भी आपको ये snap tool on रखना होगा, क्योंकि अगर आप snap tool on नहीं रखेंगे तो ये कहीं पे भी create हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, right? We don't need that. We need to press this snap tool, or the shortcut is S. जब भी आप यहाँ पे create करने जाएंगे, सबसे पहले आप height दे दीजिए। दरवाजे का height normal 7 feet होता है। Width जो होता है उसका 3.5 या 3 के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस जहाँ से आप है। तो उसका डेप्थ जो है ये वॉल का ही डेप्थ होगा। एक और चीज यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, पहले ही बोलना चाहिए था, जो भी हो, ये जो वॉल का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस लाइन इज दिस वन, ओके, द बेस दैट वी क्रिएटेड। नाउ अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे F3, you can see that this wall is actually created on the outer border line. हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि दरवाजे जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो और मिडिल माउस से हम लोग इसको जूम कर सकते हैं, तो जूम कीजिए और यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये बाहरी साइड पे ये वॉल क्रिएट हो गया है। तो व्हाट यू डू इज सिलेक्ट दिस वॉल, F3, सिलेक्ट दिस वॉल, गो इनटू दिस मॉडिफाई पैनल, दिस इज द मॉडिफाई पैनल, ओके। When you go to the modify panel, now this wall is created on the center of this line. This line, ये जो बेस हमने क्रिएट किया था और कैट फाइल में, वहाँ पे ये सेंटर से क्रिएट हो गया। We don't need it, we need it from the right side. So it comes यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बैठ जाता है। Now we are rotating this whole thing by pressing Alt and middle mouse button. तो middle mouse button से rotate होता है।
we have created this from the right side. We can also do it from the center, जो कि गलत हो जाएगा. Left से भी कर सकते हैं, जो बाहर चला जाएगा. So we need it on the right side. Now we press F3. We have to create the doors. Okay. We go to the create panel again. We go select doors. We create pivot door. Now we have already given it the height. Okay, we'll set it again 7 feet. The width is 3.5 and the depth wall के जितना ही हम लोगों को depth देना पड़ेगा जो कि है 0.5 inches. Not 0.5 inches. This is yeah 5 inches it is actually क्योंकि ये feet में है तो 1 feet में 12 inches होते हैं. So we need to give 0.5 inches. So we don't need the whole feet. We need 0.5 inches only. Okay? We give this as button. S is for snap tool, and then we select this. Hold the left mouse button. Okay, left click को hold करना है और वहां पे लेके जाना है जहां तक ये प्लस सिंबल दिखा रहा है. तो इट विल स्नैप देयर डायरेक्टली. उसके बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए और इसका विड्थ जो है डेप्थ जो है वो आपको देना पड़ेगा. तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक क्योंकि स्नैप टूल ऑन है तो ऑटोमेटिकली इसको ले सकते हैं. एंड देन लीव कर दीजिए और ऊपर की तरफ लेके आइए. ठीक है, ये आपका दरवाजा क्रिएट हो गया. F3 दबाएंगे और देखते हैं कि दरवाजा कहाँ से ओपन हो रहा है. So when we go after this is created, what you need to do is always select the modify panel. Okay, this is the pivot door as it is shown here. Come little down, you will get this option of open. Okay, this is the open. Now we'll see this which side it opens. Now this is the wrong side. We can see this is the wrong side. ये wrong side open over here. We don't need this opening on this side. We need this opening on the inside. Okay, so we have to flip the swing of it. So we just flip the swing. Now ये सही तरीके से open हो रही है. So we can open it 100% open करके रख देते. Okay. Now एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो width है actually में गलत आ गई है because you dragged it. तो जब भी इस तरीके से आ जाए, we can change it from the modify panel. Just go with, you can change it to 3.5. Width is this one, ये जो left से right की तरफ, और depth थोड़ा सा कम हो गया है, so we make it again 0.5. Okay, हो गया ये दरवाजा. Now we need to create a window. इसको select करेंगे, same चीज है. और बाय द वे एक और चीज है, जब भी आप इसको क्रिएट करते हैं उसके बाद अगर आप इसको वॉल को अगर मान लीजिए आप यू करते हैं कि ये फ्लिप होता रहेगा, यहाँ वहाँ जाता रहेगा. सो यू विल हैव टू डीसिलेक्ट दिस स्नैप बटन. जब भी आपको ऐसा लगे कि ये यहाँ वहाँ चला गया है, जस्ट डीसिलेक्ट दिस स्नैप बटन. ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ विंडो. सो विल गो अगेन टू द क्रिएट पैनल. ओके, देन वी सिलेक्ट दिस Windows. This is the option for Windows. बहुत सारे विंडो के ऑप्शंस होते हैं, but the most used one is sliding. ठीक है. We press F3 to go to the wireframe mode. We press the S key for the snap tool. Okay, and we can see this plus button whenever we select it. So just hold this, drag it. Left mouse button से आप इसको drag करेंगे और जहाँ भी आपको जितना भी इसको लंबा देना है आप दे सकते हैं. उसके बाद लेफ्ट माउस क्लिक को आप होल्ड करने के बाद आप इसको छोड़ दें और थोड़ा सा इसको विथ डेप्थ दे दें. डेप्थ देने के बाद क्लिक करें और ऊपर की तरफ खींच दें. ओके, आपको कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पे हमेशा F3 को आप प्रेस कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हो गया है. नाउ इसको सिलेक्ट करने के लिए सेम थिंग, W प्रेस कीजिए, ऊपर लेके आइए जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें. ओके, एस बटन को डीसिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि वो स्नैपिंग करता रहेगा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज गो टू द मॉडिफाई पैनल अगेन. हाइट इसको ज्यादा हाइट नहीं देंगे, 5 फीट काफी है. और जो विड्थ है, ये विड्थ जो होता है ये वाला विड्थ होता है. सो विल जस्ट गिव इट अराउंड 5, ज्यादा बड़ा नीचे. और डेप्थ जो है सेम हम लोग को वॉल के जितना ही डेप्थ लेना है. Now ये ठीक तरीके से प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, you can go to see it. Just go to the T, the top viewport, press T. Okay, तो आपको यहाँ से ये दिखेगा.
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही जगह पे प्लेस नहीं हुआ तो इसको जस्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ओके, नाउ प्रेस पी अगेन, कम टू द पर्सपेक्टिव मोड। ना मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो विल जस्ट प्रेस दिस विथ, जस्ट देखते हैं कितना। डाइनिंग टेबल यहाँ पे है तो हम लोग चाहेंगे कि ये डाइनिंग टेबल के जितना आसपास ही रहे। ओके, यहाँ पे। ओके, सो इसका जो ओपन है, ओपन विल जस्ट ओपन इट फुल। Now इसमें we can also do this thing, we can increase the panel horizontal lines. Now the panel horizontal lines are these lines. To give it a bit of beauty, we can make it, yeah, 3 panels, and vertical lines में हम लोग 3 दे देते हैं. So this is the vertical panel, you can see. Okay. After this, we have to create one more for the kitchen. Just hold this. To duplicate इसको फिर से नहीं बनाना है, तो just इसको duplicate करने के लिए इसको आप जो यहाँ पे ग्रीन कलर का वाइट एक्सेस दिख रहा है आपको, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको खींचिए, तो आपको एक दूसरा वाला मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन आएगा कि आप कॉपी या इंस्टेंस या रेफरेंस करना चाहते हैं। हम लोग को यहाँ पे कॉपी चाहिए। इंस्टेंस करने से क्या होता है कि हर चीज जो हम कॉपी पे चेंज करते हैं, वो जो उसका पेरेंट होता है जहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, वहां से वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग को इंस्टेंस नहीं करना, हम लोग को कॉपी चाहिए, प्रेस ओके। और जब भी इस तरीके का थोड़ा सा आपको शेडिंग का ऐसा दिखे कि कोई गलत हो रहा है, तो जस्ट गो टू द ओपन, ये स्लाइडिंग विंडो का ओपन में जाइए और ये अपडेट कर देंगे यहाँ से। और ये वाला विंडो हम लोग को इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा सा विड्थ हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये हाइट जो है विंडो का ग्राउंड लेवल से कितना चाहिए, तो हम लोग फ्रंट में जाते हैं, एफ गो टू फ्रंट। ओके, गो टू दी फ्रंट। अगर आप लोगों का यूं आ रहा है तो प्रेस F3 गो। ना ये जो हाइट है ये खिड़की दरवाजे का है, तो विल सी कि इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट अपडेट इट लाइक दिस, प्रेस P। इसको भी हमने सिलेक्ट करना था, नहीं हुआ तो हम फिर से एक बार जाएंगे। ओके, press P again, come to the perspective viewport. Now this is the basic structure that we have created. Now we need to place a floor on this. Go to the top view, select S, press S, and then we have to create a floor. We go to the create panel, go to the shapes panel, select line, just select these, click, और ये हम लोग आउटसाइड पे कर रहे हैं क्लिक। ओके, इनसाइड पे मत करिए ना, इसको इनसाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस on the outside. Now if you press the shift key, it will always be on the straight line. If you don't press shift, it will go outside of this. You have to press shift key, select it, and click, close this line. Okay, now we go to the perspective viewport. Now we can see the line that has been created, F3. Now the line that has been created, actually हम लोगों का दो ऊपर आ गया, दो vertices हम लोगों का नीचे चला गया। तो what we need is either you can pull these 2 vertices down, या फिर इन 2 vertices को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। To do that, press the W button, और ये अभी फिलहाल सिलेक्टेड है जो हमने लाइन क्रिएट किया है। तो मॉडिफाई पैनल पे जाइए, लाइन पे जाइए, वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिए, और इन दोनों वर्टेक्स को फिर कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी स्नैप टूल ऑन है, इसीलिए आपको इसको करना नहीं ईजी होगा। जब जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्नैप कर लेगा। स्नैप हो गया, प्रेस F3, दिस इज द लाइन। गो बैक टू लाइन। जब तक आप वर्टेक्स में रहोगे तब तक आप दूसरा कोई भी काम नहीं कर पाओगे या फिर कोई भी सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। सो गो टू द लाइन अगेन, सिलेक्ट दिस लाइन, गो टू दिस मॉडिफायर्स लिस्ट। यहाँ से हम लोग मॉडिफाई करेंगे एंड विल पुट एक्सट्रूड ऑप्शन, EXT जैसे आप प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड ऑप्शन आएगा। एक्सट्रूड में हम लोग का जो नॉर्मल फ्लो जो होता है वो
0.3 इंचेस से लेके 4 इंचेस तक होता है. So we'll put 0.4. Here we'll put 0.4. व्यू में जाएंगे. F3 अगर क्यों होता है तो just press F3. Okay. Go down. Place it somewhere like this. It's done. Deselect the snap button. Press P. Come back to the respective viewport. Okay, so we have made the basic structure from here. Now we need to populate this structure with sofas, dinings, and all of those stuff. So to do that, what we do is we have some objects here. These are the objects that can be made on the software. But to save your time, what we do is when we make these, let's say we make this carpet. Okay, this is the carpet that we made. Okay, after this what we do is we save it in a format called object, 3D object format, or you can save it as a 3ds file as well. What we do is, the reason behind saving this in this format is that we need to save time when we are making designs, because when you will be dealing with clients, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हर चीज आप बनाते रहें. तो कुछ चीज़ों को आपको रेडीमेड रखना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कार्पेट को रखा है. ओके, तो इस कार्पेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेस कर देंगे, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा इस तरीके से. आ गया. अब टॉप में टी जाके प्रेस करेंगे. सबसे बड़ी बात यहाँ पे F3 प्रेस करके आप देखेंगे, अगर F3 क्यों होता है तो F3 प्रेस कर दीजिए. और देखिए ये कहाँ पे प्लेस होना चाहिए. सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसका साइज नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट करके जितना ही अभी बड़ा ही है. प्रेस R, स्केल बटन, यूनिफॉर्मली स्केल करना है आपको. ह्यू मत कीजिए या फिर ऐसे भी मत कीजिए. यूनिफॉर्मली जब आपको येलो जो है मिडिल में आता है, यूनिफॉर्मली स्केल इट डाउन. Now the reason is we are making it from the top is that we need to see the placement. कहाँ पे ये जा रहा है, we need to see the placement. Okay. थोड़ा सा और छोटा करना होगा. ऊपर से देखने में सही दिख रहा है, लेकिन I think this is not placed at the right place. Let's change the place. Press F, go to the front view. This is the floor, so we go and place it there. तो कारपेट प्लेस हो गया. ना कुछ और ऐसे मटेरियल्स मैंने रखे हैं यहाँ पे. कारपेट हो गया हम लोगों का. एक आर्म चेयर लेते हैं. आर्म चेयर का जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके की आर्म चेयर है. गो टू द आर्म चेयर and we go to this OBJ file, 3D object, click and drag, place it inside the software. So put this is again big. So we go to group. हमेशा कोई भी चीज इंपोर्ट करने के बाद उसको ग्रुप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग अलग हो जाता है. इसका नाम मैं आर्म चेयर देते हैं. हो गया. टॉप व्यूपोर्ट में जाएंगे. प्रेस R, स्केल इट डाउन. प्रेस W, प्लेस इट हियर. आता है द रोटेट टूल की बारी. तो ई दबाने से हम लोग का रोटेट टूल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन हम लोग को इसको 90 डिग्री में रोटेट करना है. तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम इसमें जो पहले मैंने दिखाया था ए बटन एंगल स्नैप को एक्टिवेट कीजिए. राइट एंगल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप 90 डिग्री सेट कर दीजिए. 90 कैंसिल एंड देन जस्ट रोटेट इट ऑन द 90 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स सी पर्सपेक्टिव में कैसा दिख रहा है. बहुत ऊपर है तो इसको नीचे के लेके जाते हैं. फ्रंट व्यू में जाते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं. ओके, so आर्म चेयर हो गया. लेट्स गो टू अनदर. टेक अ बुक शेल्फ. ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि सीन को पॉपुलेट कर पाए. ओके, बुक शेल्फ का भी एक सेम चीज है. ऑब्जेक्ट फाइल को लीजिए, ड्रैग कीजिए, प्लेस को. Now sometimes क्या होता है कि we drag it but you can see that there is no texture in it. इसमें कोई texture है ही नहीं.
तो इसको डिलीट कर दीजिए. Whenever you face this kind of problem, what you do is you have to place all of these textures in the same folder as you have saved your scene. Now हमने इसको save नहीं किया है, so we go to the software and we press S, Control S. We have to save this. Go to the place that you need to save this. Quick access पे जाता हूँ. और यहाँ पे हम लोग जाते हैं इंटीरियर सीन में. And we need to save it here because यही इसका जो है पेरेंट फाइल यहाँ पे सेव होना है. तो just press OK, enter. This is saved. Now you can see it here. इंटीरियर सीन में this folder में इंटीरियर सीन करके एक 3ds Max सीन फाइल हो गया है. Now हम लोग के बुक सेट को जब हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो उसका टेक्सचर नहीं आ रहा था. तो what we do is we just go into bookshelf. What you do is select all of it, Control A, copy this, Control C, go to the folder where you have saved this interior scene, press it there, copy paste. Okay, हो गया यहाँ पे. अब हम लोगों को जो इसका 3D ऑब्जेक्ट फाइल है ये वाला इसको ड्रैग करना है. तो यहाँ पे अब टेक्सचर आ चुकी हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन टेक्सचर है और यहाँ पे ये जो है पास से देखें तो ये वाला मेटल टेक्सचर है. ओके, हमेशा इंपोर्ट करने के बाद इसको ग्रुप कीजिए, नाम दे दीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो. प्रेस R and scale this down. Go to the top viewport, press T, take it here, press R again. जितना भी आपको स्केल करना हो आपको आइडिया लगा के करना है. Press W, place it wherever you want to place it. Press P, go to the perspective viewport. बहुत ऊपर है, इसको नीचे करना है. Go to the front view, press F. बहुत बड़ा है यहाँ पे भी, मुझे ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. Press W again and place it. Now शायद यहाँ पे ये सही तरीके से प्लेस ना हुआ हो तो you'll have to see कि हाँ ये उल्टा है. So you press the E button again for rotate, select the angle snap A, rotate it 190 degrees. ठीक है. W थोड़ा सा साइड कर देंगे इसको. So यहाँ पे आर्मचेयर कारपेट और हम लोगों का ये आ गया है. चल इसके बाद काफी सारी यहाँ पे चीजें रखी हुई है but we don't need to put all of that. Let's say we need a plant. Okay, so, कोई भी प्लांट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है. गूगल पे आप जाएंगे तो आपको काफी सारी 3D मॉडल्स मिलेंगी फॉर पॉपुलेटिंग. ओके कीजिए, आपको काफी सारी यहाँ पे 3D मॉडल्स मिल जाएंगी. तो सेम तरीका है, बस आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कीजिए, and you will see a lot of 3D models. The reason is कि आपको पॉपुलर करना है. You don't need to model all of these. So लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता कि हर एक डिजाइन ही आप कॉपी कर दें, क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग डिजाइन होता है. एंड देन यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दीज इनटू एस्पेक्ट्स और आपको ये देखना कि कौन सा चीज कहाँ पे काम आता है. तो विल जस्ट सिलेक्ट द सेम थिंग. आई जस्ट सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट प्लांट पम्प, कॉपी दिस, drag this into the scene. This is the plant. Same thing again, you'll have to group it, give it a name, plant. Press E, press R, scale this down to the top viewport. Press W, select this. We need to place it somewhere like this. Press R, बहुत बड़ा है, इसको छोटा करते हैं. Place it here. Go to the front viewport to see whether it is placed at the bottom or not.
It's not, so we will just select this and we will put it here. Okay. Press B, come to the perspective viewport. Now we do not get the idea कि कोई चीज कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है. So we need to put something जिसको बेस पकड़ के हम लोग बाकी चीजों को प्लेस कर पाए. So I'll go into the sofa. हम लोग को एक सोफा चाहिए. Same thing, OBJ फाइल लीजिए, ऑब्जेक्ट फाइल, drag, put it in the scene. Okay. So कभी कभी टेक्सचर्स के प्रॉब्लम आते हैं. जब भी टेक्सचर्स की प्रॉब्लम आते हैं, आप उस सीन की जो टेक्सचर्स हैं कॉपी कीजिए. अगर इसमें भी प्रॉब्लम आता तो मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करता, सारे के सारे को कॉपी करता और यहाँ पे प्लेस कर देता जहाँ पे कि आपका इंटीरियर सीन सेव्ड है. अब इसको जरूरत नहीं है तो हम लोगों ने नहीं किया. ये जैसे ही आता है हमेशा इसको ग्रुप कीजिए. सो okay. We need to stop sometime. This is a very CPU based software. RAM भी बहुत लगता है इसमें, तो sometimes you might need to stop. ये stuck हो जाता है. Okay. Press R, scale this down, go to the top viewport. थोड़ा सा और scale चाहिए. W, select this, zoom into the scene by pressing the scroll button. Just scroll it down, place it. R, scale it again because it is big. From the top viewport, place कीजिए इसको यहाँ पे. फ्रंट व्यू को जाएंगे, देखिए ये कहाँ पे है, बहुत ऊपर है तो इसको नीचे लेके जाना है हम लोग को. This is the floor. Okay. P, and then we come to the perspective viewport. Now we can see that this guy is very big blend. तो इसको थोड़ा सा हम लोग को छोटा करना है. Okay. To the side. Okay. Now because we made it smaller, इसका जो placement है ये डाउन चला गया है या फिर ऊपर चला जाता है. Go to the front viewport again and see, चेक कीजिए कि यहाँ पे सही से प्लेस हुआ है कि नहीं. तो प्लीज कर दीजिए. ओके, गो टू द पर्सपेक्टिव viewport again. नाउ यहाँ पे ये बहुत पास पास हो गया है तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग साइड कर देंगे. जाते हैं थोड़ा सा इसको साइड. ओके, सेम चीज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के और डुप्लीकेट, just hold it and place it here. Copy. Okay. Okay. Two more things. One is the dining set. The objects that you have saved from the internet. I don't suggest putting everything by downloading, because in Polygon modeling, we need to model this stuff. Now, these are the stuff that we need to actually model on Polygon-based stuff. So, but for the reason to explain this, I have to, show it here. So मैंने इसको सीधा यहाँ से import करना है. So यहाँ पे एक और ऑप्शन है, टेबल एंड चेयर कोरोना 2030 लिखा हुआ है, टेबल एंड चेयर वीरे 2030 लिखा हुआ है. ना मैंने जैसे पहले बोला था कि कोरोना एक दूसरा रेंडरर है जैसे कि वीरे है. I'll tell you about the render again. Select the video version, drag it, place it, and merge file. हमेशा merge कीजिए. Okay, यहाँ पे प्लेस हो गया है. बाहर इसको ग्रुप करते हैं. इसका नाम देते हैं डाइनिंग. टॉप
व्यूपोर्ट में जाते हैं और थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, W you have to check the placement, go to the front viewport by pressing F. You will see where it is placed. You need to place this. Also, towards the side view with that. Let's do P again, go to the perspective viewport. It seems to be okay. Now, last thing we need to put is a TV and a kitchen. Now this is the OBJ file, this is the material file, this is the 3ds file from which it was created. We don't need these two, we need to select the OBJ file, hold and drag, put it in the field. And there it is. Now कभी-कभी आप इस तरीके से गुम हो सकते हैं कि आप कहाँ पे आ गए. So whenever this happens, just press V. V यानी आप उसके पास चले जाएंगे. Okay. उसके बाद group same process. Kitchen. Okay. Now this is a group. कहीं पे भी आप deselect होता है, आप select करोगे तो एक ही फाइल होता है वो फिर. R scale तो व्यूपोर्ट से देखिए कहाँ पे है. ओके, बहुत दूर है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे. और W R again E for rotating this angle snap already there. अगर नहीं है तो आप A दबा सकते हैं, रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पे. Press W, select and move, place it here. थोड़ा सा बड़ा है. Now यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ऑटो सेव इन प्रोग्रेस. So this is the reason why this is buffering, क्योंकि ऑटो सेव प्रोग्रेस में. और ये ऑटो सेव जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है. यहाँ पे एक लोकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ. पीसी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, ये डिफॉल्ट इसकी लोकेशन होती है. 3ds Max के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो बैकअप. रीजन ये है कि जब भी आपका सिस्टम अगर क्रैश होता है तो ये ऑटो बैकअप जो है एकदम रिसेंट जो फाइल है 1709, जैसे अभी हम लोग का 1716 है 5:16 की. तो ये वाला फाइल जो अभी सेव हो रहा है, तो यही रीजन है कि ये आपके अपडेट हो रहा है. ठीक है. R थोड़ा सा और छोटा करना है इसको. W शायद ये ठीक तरीके से बिल्कुल प्लेस नहीं हुआ है, तो वो गो टू द फ्रंट व्यू फोर अगेन. F फ्रंट व्यू फोर और W प्रेस करके काफी ऊपर रह गया. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं लगता कि कहाँ पे है एक्चुअली. तो जस्ट सिलेक्ट इट, पुट इट देयर, गो टू द फ्रंट व्यू पोर्ट एंड इसको प्लेस कर दीजिए. प्रेस P फॉर द पर्सपेक्टिव व्यू एंड इट विल बी राइट पोजीशन. अगर ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल गायब से हो गए हो, कहाँ पे है पता नहीं लग रहा है, घूम गया है, तो प्रेस C दबाने से कंप्यूटर कीबोर्ड में जब आप जी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंच जाएंगे. अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो गई है. एक और लास्ट चीज़ हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, एक टीवी सेट यहाँ पे डालना होगा. ये टीवी सेट है, इसका 3ds मॉडल है, इसका ऑब्जेक्ट फाइल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होने के कारण हम लोग सीधा ही इसको 3ds फाइल को लेके आते हैं. इसको ग्रुप कीजिए
नाम दे लीजिए टीवी और व्यूपोर्ट पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे प्लेस है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे स्केल, आर बटन दबा के थोड़ा सा स्केल, ठीक है। E for rotation, angle snap is on, rotate it 90 degrees, hold the W button। पर्सपेक्टिव में जाएंगे कि देखेंगे कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे ये बहुत नीचे प्लेस हो गया है, ऊपर लेंगे इसको थोड़ा सा साइड में, दरवाजा है यहाँ, ओके। ना यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं आ रहा है, सो हम लोग को एक टेक्सचर यहाँ पे डालना होगा। इससे पहले हम लोग एक और चीज करते हैं, ये जो खिड़कियां हैं उसमें एक टेक्सचर डालना होगा और फ्लोर और वॉल्स पे एक टेक्सचर डालना है। तो वॉल में जो है हम लोग यहाँ से, इसमें कोई टेक्सचर नहीं लगेगा, हम लोग डायरेक्टली इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट, आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये आएगा डायलॉग व्हाइट, ओके, ये व्हाइट कलर का हो गया। फ्लोर जो है इसके लिए हम लोग को एक टेक्सचर देना होगा। यहाँ पे जो टेक्सचर पैनल है उसको करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल एडिटर, ये है मटेरियल एडिटर, शॉर्टकट इज एम, जिससे ही आप इसको एम प्रेस करोगे तो आपका मटेरियल एडिटर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी जो है स्लॉट्स हैं जो कि भर चुकी हैं। ये भर इसीलिए चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट की है फाइल्स, वो सब टेक्सचर्स ये ले चुकी है। तो हम लोगों को क्या करना है, सॉरी, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो डिफॉल्ट करके एक ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके मल्टी सब ऑब्जेक्ट एक ऑप्शन होता है, इसको आप डबल क्लिक कर दें, ऑप्शन आएगा डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल, ओके करते हैं। यहाँ पे अब आपको 10 जो है ऑप्शन स्लॉट्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्लोर को लेके एक टेक्सचर डालेंगे। तो ये जो नन लिखा हुआ होता है यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे जनरल में हम जाएंगे तो अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, कभी कभार आपको यहाँ पे बिटमैप का ऑप्शन नहीं दिखता है। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे जो रेंडर सेटअप है या फिर शॉर्टकट इज एफ, सॉरी, शॉर्टकट इज, वेट अ सेकंड, हाँ, ओके, ओके। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है रेंडर सेटअप, दैट इज द शॉर्टकट इज F10। इफ यू प्रेस दिस यू विल सी, अगर आप यहाँ पे नीचे आए स्क्रॉल करके तो यहाँ पे एक ऑप्शन है असाइन रेंडर ना, यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर है, ठीक है। तो इसको आपने प्रेस करके वीरे करना है। जब भी आप वीरे को इंस्टॉल करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ओके कीजिए। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ये भी आपने स्कैन लाइन से हटा के वीरे करना है, ओके। इसको क्लियर करते हैं और प्रेस द क्रॉस बटन। ना मल्टी सब के अंदर हम लोग है, नन को क्लिक कीजिए और वीरे मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। वीरे के अंदर आपको इस तरीके से भी दिख सकता है डिफॉल्ट, तो आपको वीरे क्लिक करना है, वीरे मटेरियल, ओके। वीरे मटेरियल के अंदर है हम लोग, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफ्यूज, तो यहाँ के साइड में एक क्लिक टू पिक अ मैप और ड्रॉप ए मैप करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिटमैप। बिटमैप वो होता है कि जब आप टेक्सचरिंग करने बैठते हैं तो ज्यादातर जो टेक्सचर्स होते हैं वो हमें बिटमैप के थ्रू डालना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, गूगल पे जाएंगे तो आपको वुडन टेक्सचर करके अगर आप तो आपको काफी सारे जो है इमेजेस मिलेंगी यहाँ पे वुडन टेक्सचर्स की। तो हमें एक फ्लोर का वुडन टेक्सचर चाहिए, तो हमें कोई एक हाँ, इस तरीके का एक हम लोग, थोड़ा सा छोटा है ये बट स्टिल इट्स ओके, वी कैन सेव दिस इमेज। और यहाँ पे हम लोग इसको फ्लोर टेक्सचर,
यहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे और ये जो हम लोगों का बिटमैप का ऑप्शन था ये ऑटो सेव हो रहा है, इसीलिए ऑटो सेव के वक्त ये इस तरीके से बफर होता है। तो वेट फॉर दैट टाइम। ओके, हो चुका है। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर ये मटेरियल होता है वीडियो मटेरियल। यहाँ पे अगर आप नन होता है नॉर्मली, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, वीडियो मटेरियल। ओके, वीडियो मटेरियल के बाद डिफ्यूज का ऑप्शन साइड में वेयर, इसको प्रेस कीजिए। बिटमैप। अब बिटमैप से हम लोगों को जहाँ से भी आपने उसको सेव किया है वहाँ पे जाइए और फ्लो टेक्सचर ओपन। ठीक है, ये वाला जो फ्लोर है सिलेक्ट कीजिए, देख लीजिए ये है कि नहीं। कंट्रोल जेड है, यही है। तो उसके बाद हम लोग इसमें असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और शो शेडिंग मटेरियल इन व्यूपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक्सट्रूड डाला हुआ है, तो वी नीड टू पुट अ मैप ओवर दिस। UVW अगर प्रेस करते हैं, UVW का मैप हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब आपको ये टेक्सचर दिखेगा लेकिन थोड़ा सा फटा हुआ सा है, तो ये हम लोगों को ये जो है यूवी जो टाइलिंग होता है वो आपको चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये यू है यानी एक्स, ये वाई है। थोड़ा सा इसका टेक्सचर हम लोग को बदलना होगा। आप इसको प्ले करके देखिए, प्ले अराउंड विद दिस, व्हिचएवर वर्क्स फॉर यू, जैसे भी आपको अच्छा लगे प्लेस कीजिए। ठीक, और इसमें एक ऑप्शन है, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे यूवीडब्ल्यू पे, तो गिज्मो का एक ऑप्शन होता है, तो गिज्मो को भी आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमें नहीं करना है तो वापस जाते हैं। तो दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। एक और लास्ट चीज है, एम प्रेस कीजिए तो ये आएगा। अगर हम अभी बिटमैप पे हैं जो कि फ्लो टेक्सचर यहाँ पे पुट हो गया है, अब हम लोग को वापस जाना है वो नन वाला जो ऑप्शन है यानी मल्टी सब ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गो टू पेरेंट, गो टू पेरेंट, फिर एक दोबारा गो टू पेरेंट। अब हम यहाँ पे वापस नन को सिलेक्ट करेंगे। सेम वे वीडियो मटीरियल, ये हम लोग खिड़की की जो ग्लासेस है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, और वीडियो मटेरियल के अंदर आपको डिफ्यूज में इस बार ये वाला क्लिक नहीं करना है, डिफ्यूज में जाएंगे, व्हाइट सिलेक्ट करेंगे। ये क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें भी व्हाइट, और रिफ्लेक्ट में भी थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन। आप जैसे ही यहाँ पे हम लोग चेंज करते रहेंगे आपको यहाँ पे अपडेट दिखता रहेगा। तो जस्ट चेंज दिस लिटिल बिट, तो यहाँ पे आपको ग्लास जैसा कुछ इफेक्ट दिखेगा। तो उसके बाद इसको ओके कीजिए। अब हम लोग इसको करते हैं, लेकिन अगर आप इसको टेक्सचर देना चाहते हैं तो पूरे के पूरे को टेक्सचर नहीं दे सकते क्योंकि तब पूरा ग्लास हो जाएगा। वो नीचे हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट पॉली करके, ठीक है, मॉडिफायर्स लिस्ट में यहाँ से आपको मिलेगा। मॉडिफायर्स लिस्ट से आप EDI जैसे प्रेस करेंगे तो एडिट पॉली में जाएंगे। इसको राइट क्लिक को, राइट एरो को हम लोग क्लिक करते हैं, पॉलीगॉन में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एम प्रेस करेंगे। जो हमने पहले क्लास क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट करने के बाद असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और शो शेडिंग। तो ये क्लास का क्रिएट हो चुका है। कभी कभार इसमें मुश्किल हो जाता है, लेट्स सी इसके बाद क्या अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वी ट्राई टू क्रिएट करेक्ट इट। उसके बाद हम लोग को एडिट पॉली में वापस जाना है, इसको इसको भी हम लोग को एडिट पॉली लेना है। एडिट पॉली, ओके, फिर हम लोगों ने इसको पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है और इसको सेम चीज यहाँ से आप असाइन कीजिए।
एडिट पॉइंट पे वापस तो डीसिलेक्ट। एक और चीज रह गया है इसमें, जो दरवाजा है इसमें कोई टेक्सचर ना डाल के हम लोग सीधा सिंपलिसिटी के लिए इसको सिर्फ एक कलर दे देते हैं। ऑटो सेव हो रहा है, इन प्रोग्रेस। एक और चीज है, ऑटो सेव तो अपनी जगह पे होता रहेगा, आप लोग को कंट्रोल एस करके थोड़ी थोड़ी देर में जब आप डिजाइनिंग के बीच में होते हैं तो आपको सेव करते रहना चाहिए। हम लोग इसके लास्ट प्रोसेस में हैं, तो विल फिनिश दिस अप वेरी सून। ओके, तो यहाँ से हम लोग हाँ सब कलर थोड़ा सा ब्राउनिश कर दिया हमने। एक और चीज़ है, टीवी का टेक्सचर हम लोगों ने भूल गए हम डालने के लिए, तो ओके यहाँ पे कोई ग्लिच है शायद, कोई बात नहीं। हम लोग एम पे जाते हैं और गो टू पेरेंट मटीरियल, और इसका जो टेक्सचर है ये राइट वाला बटन, इसको प्रेस करके ये वाला राइट वाला बटन, टेक्सचर के लिए हम लोग इसमें बिटमैप में जाएंगे। जहाँ पे भी आपको टीवी सेट का टेक्सचर है उसको ओपन करके यहाँ पे लाना है। ओके, जैसे आप इसको लाएंगे, इसको आपको ये सिलेक्ट करके असाइन करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्सचर लेंगे इसमें, ओके। कभी कभी ग्लिच होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहना होगा कि शायद कुछ काम ना करे। अब जैसे हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है ना, ये रोटेशन गलत हो रहा है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं और पे है, कि ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप से रोटेट हो रहा है। तो हमेशा सेंट्रल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्रिएट करके सिलेक्ट करके रोटेट करते हैं तो ईजी होगा। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग का हो चुका है। अब लास्ट एक पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के पर्पज से है तो हम लोगों को पूरा नहीं चाहिए। सेगमेंट को आप ये वॉल को सिलेक्ट कीजिए, सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए और टॉप व्यू में जाके हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेगमेंट है ना इसको हम लोगों को छोटा करना है। छोटा कौन सा सेगमेंट सिलेक्टेड है ये देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर दिखेंगी, ये जो है ये क्रॉस सिंबल्स दिखेंगे आपको, यहाँ पे भी क्रॉस सिंबल्स है ये। तो जो भी सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए आप उसको खींच के ऊपर से ड्रैग कीजिए। ओके, और इसका जो हाइट है हम लोग को थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि ये सिर्फ विजुअलाइजेशन की पर्पज से है, तो इतना काफी होगा आई थिंक। वो 3 फीट करते हैं इसको। ओके, कंप्लीट है। अब लास्ट जो पार्ट है, फ्रंट व्यू में जाके हम लोग को एक कैमरा, यहाँ पे क्रिएट पैनल पे जाएंगे और कैमरा पे जाएंगे। कैमरा में एक स्टैंडर्ड होता है और जो नॉर्मल होता है, जब आप वीरे को इंस्टॉल करोगे या फिर कोरोना को इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको वीरे का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाके फिजिकल कैमरा लेंगे और यहाँ पे एक कैमरा सेट कर देंगे। बस यहाँ से अब जैक करना है इसको, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं और पे ये प्लेस हो गया है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा साइड लेके आएंगे, ठीक है। इसी को क्लिक करते हुए राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टारगेट। टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम लोग को टारगेट यहाँ नहीं, यहाँ पे चाहिए।
हम लोग थोड़ा सा ऐसा वाला एंगल चाहिए। अब दूसरी चीज मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये जो है, आप इसके मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, कैमरा को सिलेक्ट करके मॉडिफाई पैनल पे जाएंगे तो आपको फिल्म गेट, फोकल लेंथ और जूम फैक्टर का 3 ऑप्शन मिलता है। तो फिल्म गेट जो है वो काफी बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए। फोकल लेंथ काफी बड़ा हुआ है इसको। अब तीसरा जो है वो बहुत दूर चला गया था, तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो ये नीचे आएगा, थोड़ा सा पास में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, टारगेट को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, जैसे कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक सा लग रहा है। अब कैमरा के व्यू में जाने के लिए सी प्रेस करेंगे और देखेंगे कि कैमरा यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, दूर थोड़ा सा लेके जाते हैं। फिल्म गेट को फिर प्रेस पी। कैमरा व्यूपोर्ट में जब हम होते हैं तो सी दबा के हम लोग कैमरा व्यूपोर्ट में होते हैं, ऑटो सेव हो रहा है। कैमरा व्यूपोर्ट में जब होते हैं यानी सी प्रेस करके हम लोग कैमरा के अंदर होते हैं, तो उसके बाद अगर आपको कैमरा की पोजीशन चेंज करनी होती है तो फिर आपको पी दबा के पर्सपेक्टिव व्यू में फिर से आना है। तो जब भी आप किसी भी व्यूपोर्ट पे हो, कोई सा भी व्यू हो, चाहे वो कैमरा का हो या फिर नॉर्मल टॉप बॉटम लेफ्ट या फ्रंट का हो, press P, come to the perspective viewport for being easy, with working the software. यहाँ पे प्रेस एस्केप टू कैंसिल आ रहा है, पर हम लोग कैंसिल नहीं करना है। ओके, हो गया। आप कंट्रोल एस से इसको सेव भी करिए, रिस्क नहीं लेना है आपको। तो ये प्रेस पी, कम आउट ऑफ इट, देखें कि कहाँ पे है। ओके, अब हम लोगों ने कैमरा तो सेट कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई लाइटिंग नहीं है, तो फ्रंट व्यू में जाते हैं। हम यहाँ पे एक लाइटिंग देंगे, क्रिएट पैनल, और ये वाला जो लाइट है इसको सिलेक्ट कीजिए। फोटोमेट्रिक नॉर्मल होता है, हम लोग वीरे में जाएंगे, वीरे सन क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, हो गया आपका वीरे सन क्रिएट। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली एड ए वीरे एनवायरनमेंट, स्काई एनवायरनमेंट, तो इसको यस कीजिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव में जाते हैं और देखेंगे कि कहाँ पे ये प्रेस हो रहा है। अब ये सन जो है, इसका जो प्लेसमेंट है ये डिपेंड करता है कि कितना बजा हुआ है। जस्ट प्रेस इट बेस्ड ऑन आपको कहाँ पे पसंद आता है यहाँ पे। ठीक है, सेम वही, इसको राइट क्लिक कीजिए, टारगेट को सिलेक्ट कीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि टेबल के ऊपर गिरे, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ ऊपर लेके आते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक रहेगा शायद। कैमरा पे जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है रेंडर का सेटअप। रेंडर का सेटअप जब हम क्रिएट करते हैं, इसको प्रेस किया हमने, मैंने पहले ही इसको वीडियो सेट किया था। अगर वीडियो आपका नहीं सेट किया होता है तो आप असाइन रेंडर में जाएंगे और यहाँ से आप इसको वीडियो को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप जब इसको रेंडर करेंगे यानी फाइनल आउटपुट जब आप निकालना चाहेंगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है कि किस रेजोल्यूशन में आप इसे निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस है। अब हम सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो विल जस्ट पुट इट 640x480 डिफॉल्ट रहता है। एक और ऑप्शन है ग्लोबल इल्यूमिनेशन GI, इसको आप एनेबल रखिए, अगर डिसेबल्ड है तो एनेबल कर दीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं, इसको रेंडर करके कैमरा व्यू में जाएंगे, सी प्रेस करेंगे और इसके बाद रेंडर करेंगे। रेंडर का ऑप्शन ये है, रेंडर प्रोडक्शन, शिफ्ट क्यू इसका शॉर्टकट है, या फिर F9 भी होता है, तो F9 प्रेस करेंगे, देखेंगे कि क्या आता है। काफी जला हुआ आ रहा है इमेज, इसको कैंसिल करना होगा हम लोग को। सन का जो इंटेंसिटी है काफी ज्यादा होगा। मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करना होगा हम लोग, साइज को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको। तो ये थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा था, अब भी थोड़ा सा डार्क आ रहा है, तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। एक और लाइट हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं,
ये पैनल पे जाएंगे, ये लाइट में है, वीरे में तो है ही, हम लोग वीरे लाइट सिलेक्ट करेंगे, इसको प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए, जस्ट इसको टॉप व्यू से लेके इसको प्लेस कर दीजिए जहाँ पे भी आपको प्लेस करना। फ्रंट में जाएंगे, कहाँ पे है देखेंगे, ये नीचे है तो ऊपर लेके आना है यहाँ पे। अब इसका थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ओके। कैमरा व्यू पे जाते हैं, एक और ऑप्शन यहाँ पे मॉडिफाई में जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में जो है ये ऐसे रहता है, जैसे वीरे लाइट के ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे इनविजिबल कीजिए, इनविजिबल इसीलिए ताकि रेंडर में ये लाइट विजिबल ना हो, ठीक है। कैमरा व्यूपोर्ट में है, रेंडर कीजिए, तो इस तरीके का एक रेंडर आता है। हम लोग के क्लास में जो है इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ट्राई टू फिक्स इट, क्या प्रॉब्लम देखते हैं। कभी कभार ये प्रॉब्लम कर जाता है, आपको ट्रबल शूट करना होगा, मटेरियल में जाते देखते कहाँ पे प्रॉब्लम है। ग्लास का जो ये है, इसमें क्लिक करते हैं, देखते हैं सारा कुछ तो सही है। पॉलीगॉन असाइन कीजिए, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट कभी कभी हो जाता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको थोड़ा सा ट्रायल एरर करना पड़ता है इसमें। पॉलीगॉन कभी कभी नहीं लेता है, तो we'll see if it doesn't work, it's all right, कोई बात नहीं। कभी कभी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, स्टॉप कीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कैमरा व्यू में रहते हुए हम लोग इसमें वीडियो कैमरा में जाके शो सेफ फ्रेम्स, ये सेफ फ्रेम इसीलिए कहा जाता है ताकि इसके बाहर कुछ ना जाए, आप जो भी है इसके अंदर ही रखें, तो आपका रेंडर में कुछ भी गायब नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं यहाँ से बाहर रखता हूँ। प्लेसमेंट जो है मुझे कैमरा की इतनी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। Okay, so Ankesh has asked, 3D Max is more trending and it also helps in making dream home. Yes, it does. You are right, Enter. So what are the best software for 3D modeling, Max or Maya? See, this is very subjective question because it depends on you, what you want to design. Based on that, for architectural design, I would say that 3ds Max is the best to do so. And apart from that, अगर आपको character animation करना है तो Maya would be the best option, no doubt about it. That is the industry स्टैंडर्ड। आप माया को सीखिए अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन करना है। जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। कैमरा इनपुट में जाते हैं, कभी कभार आपको कैमरा को ट्रायल एरर करना होता है कि आपको कौन सा एंगल सबसे अच्छा लग रहा है। प्रेस F9 फॉर रेंडर। थोड़ा सा दूर करना है इसको, ओके।
दिस इज द बेसिक आइडिया। तो आपको बस इसको प्ले करना है कि कैसे आपने करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लुक सिलेक्ट कैमरा और इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए। बड़ा है थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड। दूसरा कैमरा हम लोग पुट करके देखते हैं। टॉप व्यू पोर्ट पे जाते हैं, क्रिएट पैनल, और कैमरा पे जाते हैं, टिपिकल कैमरा। कभी कभी कैमरा के सेटअप में बहुत आपको प्ले करना होता है। प्रेस पी, सिलेक्ट टारगेट, इसको आप नीचे कीजिए। जैसे प्रेस सी प्रेस करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा कैमरा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैमरा को सिलेक्ट कीजिए। जूम ज़्यादा हो गया तो जूम फैक्टर को हम लोग को चेंज करना है। ओके, सो यू गेट द बेसिक आइडिया अबाउट दिस। आप जब भी इसको रेंडर करेंगे तो इसको रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस इज द प्रोसेस। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो एनी क्वेश्चंस एनीबडी? Yes, it's really amazing. So there was, what are the disadvantage of using this software? Is there any? See, this is because of architectural design, this is the best software. कोई disadvantage या फिर वैसी कोई बात नहीं है। As far as designing goes, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, आपको करना है तो it's up to you कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। It's up to you. I'm sorry, I was on mute. This is really nice. You have designed the entire one studio apartment. Yeah, This because will be कम समय में इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, but still I've tried to include a few things over here. right. So, Okay. when you talk about architecture design, do you get this idea of designing from your, the organization, from the client, that this is the, Yes, yes, yes. As I have shown it here, can you see my screen here? yes. Yes, okay. So I made this design based on this CAD file. This is the AutoCAD file that will be given by the client, the engineer. जिसका भी client होगा तो वो आपको provide करते हैं, and based on that CAD file, you will be designing it on the software. Inside the Okay, software. okay. Wonderful. Got it. So the basic idea, we get it. And unless you are a designer and you are presenting it to someone, the client will give you the design. Yes, yes, yes. The client will. Okay. And what is the, like, I think in architecture nowadays, wherever you see, you get the 3D models also, and only these modelings, after looking at the modelings, only the clients their customers are actually buying the product, because Hmm. this 3D is giving the entire idea of how things are going to be in actual. G, G. Right. And what are the career prospect for 3D modeling when it comes to architecture? सी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग फर्म्स होते हैं, जो लोग एक्चुअली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या फिर फ्लैट्स को डिजाइन करते हैं, देयर यू विल नीड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल मॉडलर्स। ओके,
तो वहाँ पे आप जो भी फार्म्स होते हैं उनको आप प्रोसीड कीजिए, वहाँ पे जाइए एंड कॉन्टेक्ट देम एंड से कि आई एम ए मॉडलर, आई एम ए डिजाइनर एंड आई कैन डिजाइन दी स्टफ, जस्ट गिव मी द मॉडल्स। ओके, ये एक तरीका हो गया अप्रोच करने का। दूसरा एक और तरीका है कि आप खुद से इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है आजकल भी, वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करके इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडिया में तो फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस और यहाँ पे चल रहे हैं, यू नो, इनसाइड ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड क्लाइंट्स भी होते हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज में होते हैं, नाइजीरिया, कोलंबिया या फिर यूएस के हो गए। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं वंस यू गेट इनटू द प्रोसेस। एक बार रोल हो गया तो उसके बाद यू विल गेट द क्लाइंट्स, कंटिन्यू होता रहेगा। Great. Great. So I must say thank you so much for your time today. Tomorrow we are coming up with another session with Mr. Sharat Das. He'll be talking about Hindustani classical music and importance of voice culture. Also, we'd like to offer a certificate of appreciation for conducting this wonderful workshop. Anubhav sir, this is on behalf of my organization, Media and Entertainment Skills Council, and we'll be sending this to you. So thank you All so right, man. much. Thank you. Really, Thanks a lot. And I would like to say a few things. I've seen, your episodes on YouTube, and these episodes are of great help for the people who want to know about a certain field. So, us wajah se, I think this is a great initiative, and it was nice doing this workshop with you guys. I hope that whoever has seen this, at least thoda sa idea unko ho jaye, then they can proceed by themselves. indeed. Thank you so much. Really means Thank a lot. you. Also, this week is entirely full, and we are coming up with Unleash Your Inner Strength with Miss Reshma Qureshi, an Indian model, vlogger, plus she's an acid attack survivor. So we have a lot to learn from her. We'll also come up with fashion photography by Mr. Virendra Kumar Patnaik on 23rd. So 22nd, 23rd, 24th are all booked. 4 o'clock we'll meet again. So till tomorrow, take care, stay safe, and we'll meet tomorrow. Thank you so Thank much, you. Anubhav ji. Thank you. Bye bye. Take Bye care. bye.